Good morning, students. Today we will learn about the formation of images by lens, convex as well as concave lens. Before this video, we have studied about the rules of formation of images by lens. Now, first we will note down the position of the object, where object is positioned. This one is the convex lens. This straight line which passes middle to the lens, convex lens, is the principal axis. Now, the middle center, this is the optical center, this is principal axis, this is F1 and this is 2F1. Now, this position is F2 and this is 2F2. In previous video, I have already told you that what are the position of the object. Let's see also in this part. The first position is at infinity. What are the conditions when the object is at infinity, and what are the characteristic features of the image drawn by this position? The second one is when the object is at beyond 2F1. This condition is beyond 2F1. The third condition is when the object is at 2F1. The fourth condition is when the object is between F1 and 2F1. And the fifth position is when the object is at focus. Now, sixth position is when the object is between optical center and focus. So these are the 6 positions in the case of convex lens. So we will study one by one. Let's see. Now, our first condition is when the object is at infinity. When the object is at infinity, object is far apart from the lens, so rays which are parallel to the principal axis these are the rays which are parallel to the principal axis after refraction. So, rule number 1, when the rays is parallel to the principal axis, they passes through its focus. So, they passes through its focus. When these rays, by applying any two, but in this case we have the object far apart from the lens. This is very far apart from the lens, so we can apply first rule. When the rays is parallel to the principal axis, they passes through its focus.
when these two rays after refraction meet at the focus and draw a image of object which is far apart from the lens. So what are the characteristics? The image is real, inverted. These are the conditions, these are the characteristics of the image formed at focus. Real, inverted, highly diminished, and formed at focus, formed at the focus, or you can say second focus. So these are the characteristics, students. These are the very important ray diagram in exam. They जो एग्जाम के फाइनल एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्या आते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इनको मेटिकुलसली तब तक ये बनाना ना सीख जाएं, इनको मेटिकुलसली ड्रॉ कर करके देखें। ये अभी पहली कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और हम जानते हैं पहला नियम है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से जाती हैं, दे पासेस थ्रू इट्स फोकस। तो ये दोनों रेज फोकस से जब रिफ्रैक्शन के बाद दोनों ये मिलेंगी आकर के, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी, जो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी के ऊपर है, एंड कहां बनेगी, फॉर्म्ड एट द focus. Now our second condition, when the object is at beyond 2f2, this is our object AB. By applying first law, rays parallel to the principal axis passes through its focus and when the ray passes through its optical center, then passes undeviatedly. This is the rule 1, this is the rule 2. And when the reflected rays cross to each other, they formed image. They formed image. क्या बनाएंगे, ये यहां पर इमेज बनाएंगे। इमेज होगी A डैश B डैश। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। You will use the scale and pencil. यह आ गया आपका A डैश और यह आ गया आपका B डैश। What are the characteristics?
रियल, इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स के केस में ये दो फीचर्स आपको हर बार मिलेंगे, सिर्फ एक पोजीशन आएगी जहां ये चेंज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो रियल बनेगा, इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। देन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और कहां बनेगी? बियॉन्ड F1 एंड, इसको थोड़ा आगे ले लेंगे, ये आ गया आपका 2F2 और ये आपका F1। formed between F1 and F2 and 2F2। कहां बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में, लेंस के उस साइड दूसरी तरफ बनेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, और फॉर्म्ड बिटवीन F2 and 2F2। Now let third condition, when the object is at 2F1, object is placed at 2F1, a ray is parallel to the principal axis, passes through its second focus, and the ray passes through optical center meet at a point where image is formed. So this condition is, that is 2F2। एरो जरूर लगाएंगे, अदरवाइज मार्क्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिडक्ट होते हैं अगर आप एरो नहीं लगाते। ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज A डैश B डैश। कंडीशंस क्या होंगी? दैट इज रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड formed at 2F2। कहां बनेगी? 2F2 के ऊपर जाकर के बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। नाउ लेट्स सी fourth condition। The fourth condition is when the object is between F1 and 2F1। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? F1 और 2F1 के बीच में प्लेस है। वो सेम लॉ अप्लाई करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। when the ray is parallel to the principal axis, then it will passes through its focus। और दूसरी रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ले लीजिए आप 2F2 और ये आपकी इमेज बनेगी A डैश B डैश। क्या फीचर्स होंगे? पहले तो हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। पहला नियम ये, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो इट विल पासेस थ्रू इट्स फोकस। एंड द सेकंड रूल इज व्हेन द रे passes through optical center, it will passes undeviatedly. The features are real, inverted, larger than the object, कहां बनेगी? formed beyond 2F2, formed beyond 2F2. These are the four characteristics of the image when the object is placed between F1 and